Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fayyaz Muhammad. Dear student, I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. As you know, we are discussing Advanced Web Application Development course, and this is the lecture number 23. Let's check what are the objective of our today's lecture. Following are the objectives that we want to cover in today's lecture: state management, cookies, session, temp data, query string, hidden fields, cache, caching, response-based caching, different options in caching in ASP.NET Core, and in the end, we will also try to have a database application demonstration. Following are the topics that we have covered in our last lectures. These are the online resources that have been constantly consulted by me for the creation of this lecture. You are also required to visit these and any other required online resource. Dear student, let's check what is state management. As you know, web apps works on HTTP protocol, and that protocol is a stateless protocol. HTTP requests are by default independent messages that do not retain user values or app states. Means whenever you pass any HTTP request using browser, they are independent of the previous or next requests by default, and they don't know what is happening with those HTTP requests. State simply means an interaction between the user and the server. Whenever an interaction takes place between the user and the server, then a state is created. By stateless, it just means that information is not retained from one request to another request or any other subsequent or next request. Then how web application will come to know what was the previous state of the application. Each HTTP request does not know about the previous request. We need to take additional steps to manage state between the requests. For example, if you are redirecting from one page to another page, then you have to maintain or persist your data so that you can access it further in your application execution. Now, what is state management? State management is the process by which developers can maintain state and page information over multiple requests for same or different pages in web app or web application. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डेवलपर्स स्टेट मेंटेन करते हैं, किसके दरमियान, मल्टीपल रिक्वेस्ट के दरमियान और फॉर सेम और डिफरेंट pages in a web application. What are the approaches for state management? State can be stored using several approaches. For example, following are few of them: storage approach and storage mechanism, cookies, session state, temp data, query strings, hidden fields, HTTP context.items. These are the approaches that are used to manage state by the application. In the next slides, we will discuss very much detail about these approaches. In the last, we will discuss cache, again server side app code that is used to store
most frequently required data. Cookies. What are cookies? Cookies store data across requests. First of all, you must know cookies are used to store data across multiple requests, one to another, another to next, and so on. Cookie is essentially a physical, simple text file that is stored by client, and mostly client is a browser and linked to a specific website. The client browser grants this page permission to read the information stored in the file during each subsequent request. This actually allows the server or even the client itself to store information for later use. Cookies store data in the user's browser memory. Cookies size should be kept minimum as browsers send cookies with every request. That is why most browsers restrict cookie size to 4096 bytes, and only a limited number of cookies are available for each domain, and that is 20 number of cookies for each website in general. Cookies can be easily tampered or deleted by the user. User can locate where the browser has stored the cookies and can delete those cookies. Cookies can also expire on their own if some time is set for the expiration. Cookies should not be used to store sensitive information, and their value should not be blindly trusted or used without proper validation. Each time if you are using cookies, then you must have some validation process. Cookies are often used to personalize the contents for a known user. Cookies store some basic information like user's name or an identifier to access the user's personalized settings such as their preferred color, theme, etc. Cookies are generally the most durable form of data persistent on the client. Since these are stored on clients, that's why these are considered most durable form. Another state management state is session state. Session state is a mechanism to store user data while the user browses the application. Session state uses a store maintained by the app to persist data. देखें, uses a storage use करता है, और वो कौन maintain करती है? App, to persist data across request from a client. और ये कौन maintain कर रहा? By the app. Session state are maintained by ASP.NET Core by providing a cookie to the client that contains a session ID, and the cookie session ID is sent to the app with each request, and that cookie session ID is used by the app to fetch the session data further. Session state behavior. Session state exhibits the following behaviors. Number one, a session cookie is specific to the browser session. Sessions aren't shared across browsers. When a browser session ends, it deletes the session cookie. And this is not true in case of cookies. If an app receives a cookie for an expired session, it creates a new session that uses the same session cookie. An app doesn't retain empty sessions. The session must have at least one value set to persist the session across requests. When a session is not retained, a new session ID is generated for each new request. Again and again session ID आप रिटेन नहीं कर रहे तो न्यू सेशन आईडी जनरेट होगा जब कभी भी आप नई रिक्वेस्ट पास कर रहे होंगे. An app retains a session for a limited time after the
last request, and after that time it will expire. An app either set the session timeout, देखें expire होने लगी session timeout set कर देता है, or uses the default value of 20 minutes. If no activity is performed within last 20 minutes, then session will expire by default. Session state behavior. Session state is ideal for storing user data that are specific to a particular session but doesn't require permanent storage across session. Only a particular session. कि इस वक्त आप जो सेशन करना चाह रहे हैं, सेशन यूज करना चाह रहे हैं, ब्राउजर को और अपनी एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेशन के लिए सेशन स्टेट यूज की जाती है. An app deletes the data stored in the session either when we call the iSession.clear, ये ASP.NET Core हमें प्रोवाइड करती है, iSession.clear implementation, और when the session expires. दोनों पॉसिबिलिटी हैं, या तो क्लियर कर दें या सेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए. There is no default mechanism to inform the app that client has closed the browser or deleted the session cookie or it is expired. अब कोई भी डिफॉल्ट मैकेनिज्म नहीं है जिससे उसको पता लग सके. क्रिटिकल ऐप डाटा शुड बी स्टोर्ड इन द यूजर्स डेटाबेस और critical data should be cached in a session only as performance optimization if required. अगर जरूरत हो तो हम उसको कैश भी कर लेते हैं सेशन डाटा को, if needed for the optimization purposes. Otherwise there is no need to store data in session states. Temp data, another way to maintain state. Temp data stores data until it is read in another request. Temp data is particularly useful when we require the data for more than a single request. एक से ज्यादा request के लिए we can access them from controllers and views. Controller view दोनों से हम access कर सकते हैं. Temp data is available when we read it for the first time and then it loses its value automatically. What if we need to persist the value of temp data even after we read it? अगर हमने उस डाटा की वैल्यू को रखना है कुछ वक्त के लिए हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर C# ASP.NET Core फ्रेमवर्क हमें दो मेथड प्रोवाइड करता है. There are two methods to do that. Number one is temp data.keep or temp data.keep string key as a parameter. This is the method that retains the value corresponding to the key passed in temp data. If no key is passed, it retains all values in the data. Temp data.peak and string key is passed as a parameter to this method. This method gets the value of the passed key from temp data, retains it for the next request. देखें, keep and peep, these are the two methods to persist the value of temp data even after we have read it or we have used it. Temp data providers. ASP.NET provides two temp data providers. Number one is cookie based, number is session state based. Cookie based temp data is by default. It means temp data values are stored in a cookie on the client machine. Since temp data is stored in cookies, you don't need session state enabled through the session state middleware. Otherwise, if you are going to store temp data using session based state, then you are to enable session state middleware in your startup file. Just store and retrieve temp data key value pairs as you normally do in case of cookie based temp data. Storing temp data in cookies can be useful when the data being stored in temp data is small in size and
when web app is part of web form and you don't want sticky sessions. Next we will check what are sticky sessions. Temp data providers also include session state based temp data. Session state based temp data storage is enabled by using middleware, as I told earlier, and you also need to change the default provider. अब डाटा कुकीज में स्टोर होगा या सेशन में स्टोर होगा. Session state based temp data can come handy when your app is already using session state for other purposes. Session state based temp data, if you intend to store bigger chunks of data in temp data, cookie based storage might not serve the purpose and you may want to switch to session based temp data. These are the conditions when you must use session state based temp data. Next is the query strings. Query string is a part of the request that appears after the question mark character in the URL. और आप इसको देख सकते हैं, आप गूगल पे क्यूरी पास कर दें, आप उसमें सर्च पास कर दें what is state management in ASP.NET Core and press enter and check the URL after pressing enter. तो आप देख सकते हैं कि query string is a part of the request that appears after the question mark character in the URL. तो आप देखेंगे https://www.google.com and then /sign of interrogation, yes, question mark and blah blah. इस तरीके से आप उसको query string को आप चेक कर सकते हैं. Query string provides a simple way to pass a limited amount of data from one page to another or from one request to another by adding it to the new request query string. This is useful only for page number state or search terms and for capturing state in a persistent manner that allows links with embedded state to be shared through email or social networks. Keep in mind, never use query strings for sensitive data, as URL query strings are public. Anyone can change, anyone can view what you are passing, what has been passed, and so on. In addition to unintended sharing, including data in query strings can expose the app to cross-site request forgery attacks. और मैंने आपको एज असाइनमेंट एक स्टडी की केस स्टडी के तौर पे भी आपको दिया था कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी अटैक्स को ज़रूर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. हम भी देखेंगे जब वक्त मुनासिब पे कि किस तरीके से हम इन अटैक्स को कवर कर सकते हैं. Any preserved session state must protect against CSRF attacks. Next is the hidden fields. Hidden field is used to hide your data on client side. कि आपने अपना डाटा क्या करना है, क्लाइंट साइड पे हाइड करना है. These field can save data and send back in the next request. आप हाइड करेंगे और रखेंगे और send back कर देंगे next request में. Sometimes we require some data to be stored on the client side without displaying it on the page. Later, when the user takes some action, we will need that data to be passed on the server side. Very simple. This is a common scenario in many apps. For example, multiple page forms and hidden fields provide a good solution for this. Because the client can potentially tamper with the data, the app must always revalidate the data stored in the hidden field. Revalidate. Again revalidate करें कि change तो नहीं आ गए, change तो नहीं हो गए, किसी ने change तो नहीं कर दिए. So this is not recommended if you want to store a sensitive data. It's only used to store a small amount of data which is frequently changed. Cache. This is also
again used to maintain state and to enhance the performance of your web application. Cache is a hardware or software component that stores data so that future requests for the data can be served faster. हम क्या करते हैं, कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज करते हैं उस डाटा के लिए दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड बाय द वेब ऐप, और ईच टाइम ए रिक्वेस्ट इज पास टू द सर्वर there is no need to compute the data, just fetch the data from the storage and send it to the user. Cache store data that might be result of an earlier computation or a copy of data stored elsewhere. Cache it, अगर तो आपने कोई रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन ने पास की है और वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट उस ऑलरेडी स्टोर डाटा से फुलफिल हो जाती है तो हम कहते हैं कैश हिट हुआ है, अदरवाइज कैश इज नॉट हिट. कैश मिस अकर्स व्हेन इट कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड डाटा इन द कैश. कैशिंग इज एन एफिशिएंट वे टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फॉर इंप्रूविंग वेब ऐप परफॉर्मेंस by temporarily storing requested data in memory for later reuse. App can control the lifetime of cache data कि किस डाटा को कब तक कितने वक्त तक रखना और किस वक्त के बाद इसको अपडेट कर देना है. यूजर नहीं, ऐप कंट्रोल करती है सब कुछ. ASP.NET Core Response Caching. Response caching enables, this is the caching provided to us by ASP.NET. It enables us to cache the server responses of a request so that subsequent requests can be served from the cache. पहले भी बताया, अब देखें ये ASP.NET Core आपको प्रोवाइड कर रही है रिस्पॉन्स कैशिंग, और ये क्या करती है, ये रिस्पॉन्सेज ऑफ ए सर्वर को स्टोर कर लेती है ताकि फर्दर रिक्वेस्ट आए तो हम उन रिस्पॉन्सेज की मदद से उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकें. इट इज कंट्रोल्ड बाय कैश रिलेटेड हेडर्स इन द HTTP responses that specify how you want client, proxy and middleware to cache responses. कि आपने रिस्पॉन्सेज को कैसे कैश करना है, कितनी देर के लिए, किस तरीके से स्टोर करना है. Response caching reduces the number of requests a client or proxy makes to a web server. Response caching also reduces the amount of work the web server performs to generate a response because it takes off processing load from the server as they do not need to process and generate a response for the same request again. ऑलरेडी वो कैलकुलेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, कंप्यूटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, जस्ट उसे लोड करना है और यूजर को प्रेजेंट कर देना है. रिस्पॉन्स कैशिंग बूट्स ऐप परफॉर्मेंस एज द रिस्पॉन्स इज सर्व्ड फ्रॉम द कैशे, नॉट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज या अदर persistent storage after computation. Response caching key benefits include reduced latency एंड नेटवर्क ट्रैफिक. देखें डाटा ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, डाटा ऑलरेडी ऐसी जगह पे स्टोर्ड है जहां से आप इजीली इसको सर्व कर सकते हैं. हेंस इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस एंड हेंस इम्प्रूव परफॉर्मेंस. व्हाट आर द ऑप्शन फॉर रिस्पॉन्स कैशिंग? देयर आर 3 ऑप्शन फॉर रिस्पॉन्स कैशिंग. नंबर 1 is HTTP based caching, in memory caching, and number 3rd is distributing caching. HTTP caching caches data at web browsers and on the client. देखें किस पे करती है, ये डाटा कहाँ रखती है, वेब ब्राउजर्स एंड पे, ऑन द क्लाइंट. और इसके लिए हम कौन सी स्पेसिफिकेशन फॉलो करते हैं? HTTP 1.1 caching specification describes how internet cache should behave.
प्राइमरी HTTP हेडर यूज फॉर कैशिंग इज कैश कंट्रोल। देखिए इसकी मदद से हम करते हैं, कैश कंट्रोल की मदद से। हम अपनी एप्लीकेशन में डेमो में देखेंगे किसी मुनासिब वक्त पे कि किस तरीके से यूज करते हैं। विच इज यूज टू स्पेसिफाई कैश डायरेक्टिव्स and these cache directives control caching behavior as requests make their way from client to server and as responses make their way from server back to clients. Requests and responses move through proxy server, and proxy server must also conform to HTTP 1.1 caching specification, as I told you here. Okay. It describes how internet caches should behave. तो सिमिलरली हम इसी को देखेंगे, इसी के मुताबिक हम अपने कैश कंट्रोल को यूज करने की कोशिश करेंगे। Cache control header are used to set browser caching policies in requests that originate from the client as well as responses that come from the server. For example, cache dash control, अब उसमें हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं। max age is equal to 90 implies that the server response is valid for a period of 90 seconds. Once this time period elapses, the web browser should request a new version of the data. HTTP cache based caching reduces the number of requests a client makes to the web server. As I already told you, usually these are entertained by the cache instead of the web server. However, once the response is cached in the browser, it will only expire once its assigned caching time is up and cannot be cleared when needed, or user cannot clear it. In-memory caching. In-memory caching caches data in the server's memory using ASP.NET Core's own internal caching provider. वहाँ हम ब्राउजर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सर्वर मेमोरी की बात कर रहे हैं। देखिए इसको समझने की कोशिश करें। HTTP बेस्ड कैशिंग में ब्राउजर को यूज किया जा रहा है, इन मेमोरी में सर्वर की मेमोरी को यूज किया जा रहा है, और वो ASP.NET के अपने इंटरनल मैकेनिज्म है, प्रोवाइडर्स हैं। इट इज सुटेबल फॉर ए सिंगल सर्वर और मल्टीपल सर्वर्स यूजिंग स्टिकी सेशंस। पहले भी वर्ड आया था स्टिकी सेशंस का, अब देख लेते हैं। स्टिकी सेशंस मीन दैट द रिक्वेस्ट फॉर from a client are always routed to the same server for the processing. This option is more flexible for caching responses as ASP.NET Core provides cache tag helper. जैसे हमने पहले टैग हेल्पर पढ़े, इसी तरह ASP में कैश टैग हेल्पर भी प्रोवाइड करती है। विद उसकी मदद से हम फिर इन मेमोरी कैशिंग को यूज कर लेते हैं। Cache tag helper allows adding tags to specify which contents from MVC view of the app. देखिए MVC view of the app should be cached. Since this is in proc, you can restart the app ASP.NET Engine to clear the cache when required. In-memory caching boosts performance and scalability of ASP.NET Core applications by storing infrequently, देखिए infrequently changing data in the server's memory. वो डेटा जो बहुत कम रेयरली चेंज होता है, हम उस डेटा को उठाकर सर्वर की मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग, लास्ट एंड थर्ड ऑप्शन ऑफ कैशिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग caches data in memory if the application is hosted in a web farm. The cache is distributed across all the servers of the web farm, and any server can respond to the client if requested data is available in the cache. Distributed cache is external to an application. Similar to in-memory caching, distributed cache tag helpers. अब देखें ये distributed in-memory cache tag helper है। Similarly, distributed cache tag helper allows specifying exact views which need to be
कैश कौन से व्यूज को, कौन से व्यूज का डाटा हमने कैश करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैश टैग हेल्पर caches the content from an MVC view or Razor page in distributed cloud or web form scenario with the distributed cache tag helper. Distributed cache tag helper uses SQL Server, Redis और Ncache to store data. मुख्तलिफ जगहों पर वो यूज डाटा को स्टोर कर सकता है फॉर इजी एंड एफिशिएंट रिट्रीवल पर्पसेस. Distributed caches has several advantages over other caching scenario where cache data is stored on individual app server. When cache data is distributed, the data is coherent, means consistent across requests to multiple server. सबसे सेम या consistent होना चाहिए ताकि same results मिल सके. And the data survives server restart and app deployments. During server restart up और या हम एप्लीकेशन को दोबारा डिप्लॉय करने लगे तो वो डाटा वहां रहना चाहिए, अदरवाइज दोबारा उसे कैलकुलेट या अपलोड करने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. द डाटा डज नॉट यूज लोकल मेमोरी. टू मेन disadvantages of shared caching approach. Number one is cache is slower to access because it is no longer held locally to each app instance. वो किसी फर्दर अनदर सर्वर पे एग्जिस्ट करेगा और आपको वहां से उसको उठाना पड़ेगा. एंड द रिक्वायरमेंट्स टू इम्प्लीमेंट ए सेपरेट कैश सर्विस माइट ऐड कम्प्लेक्सिटी टू द सोल्यूशन. किस सर्वर पे, किस जगह पर, किस नोड पर हमने इस डाटा को रखना है. की पॉइंट्स अबाउट कैशिंग. यूज कैशिंग फॉर कंटेंट्स दैट आर एक्सेस्ड फ्रीक्वेंटली. And another, cache data isn't associated with the specific request, user or session. Avoid caching for contents that are unique per user that may be retrieved by other user request. इसलिए आपने avoid करना है उसको रखने से. Avoid caching for contents that are accessed infrequently or rarely. Use the vary by custom function to cache multiple version of a page based on customization aspect of the request such as cookies, role, theme, browsers and so on. For efficient caching, use 64-bit version of Windows Server and SQL Server. For database caching, make sure your database server has sufficient RAM, otherwise it may degrade the performance. For caching of dynamic contents that change frequently, define a short cache expiration time rather than disabling caching. Now, statelessness and web database application. As in the start we discussed, HTTP is a stateless protocol. Statelessness has also some benefits. Number one is most significant are the resource saving from not having to maintain information at the web server to track a user or request. Number second is the flexibility to allow user to move between unrelated pages or resources. However, because as we also discussed in the start of the course, HTTP is a stateless protocol. It is difficult to develop stateful web database applications. For example, it is hard to force a user to follow the menus or a series of steps to complete a task. Web apps process data that is shared between web components and is persistent between invocation of a web app is usually maintained by following ways. दो तरीके हैं. अब हम उस डाटा को persistent करने के लिए या अपने पास रखने के लिए यूज करते हैं. Data can be stored on the local file system as a specifically delimited files, comma separated values. You may use any other format. And the most common way to store information is in a database system. And database system is an application
whose primary reason for existence is to manage the creation, editing, deletion and fetching of the data. And in next session we will discuss how to persist data using databases. Dear student, we will now check our previous demonstration application. We will make few changes in the display of the data and then we will move forward for the database application. Dear student, let's start our previous party invites demonstration application for further application of ASP.NET Core. Now our previous application is loading. Let's start our previous demo application. It is now compiling and after compilation it will start executing. You can see this is our demonstration application. We have created these links and again this is an again अब हम स्टार्ट करते हैं ज्वाइन न्यू फॉर्म से. आई क्लिक इट. देखें जैसे मैंने पहले बताया था, एक ये फॉर्म हमने क्रिएट किया और उस फॉर्म का फिर आप हेडर भी देखने की क्या करें, कोशिश करें किस तरीके से. अगर हमने लेआउट चेंज किया तो उसका हेडर भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पर आकर एज इट इज मैंने नाम फैयाज सेलेक्ट किया. सिमिलरली कोई कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इधर से ईमेल सेलेक्ट कर लिया, विल अटेंड एंड आई क्लिक क्रिएट. आप देख सकते हैं ये हमें डिस्प्ले कर रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, ऑल गेस्ट लिस्ट, टोटल गेस्ट 1, विल अटेंड 1, विल नॉट अटेंड 0. और ये देखें अभी टेबल को नीचे लेके आ रहा है. अब जबकि हम चाह रहे हैं कि ये टेबल ऊपर आ जाए और उसके नीचे ये समरी इंफॉर्मेशन उसके नीचे आ जाए, तो हुआ क्या होगा, हमने वो जो व्यू क्रिएट किया है उस व्यू में जाहिर है कोई ना कोई ऐसी चेंज की है. उस व्यू को अगर हम सेट कर दें तो उम्मीद है कि ये डिस्प्ले बेहतर हो जाएगा. हम उस व्यू को चेक करते हैं कि किस तरीके से ये इसको ऊपर आना चाहिए और हमें क्या नजर आना चाहिए. तो अपने व्यू पर आ जाते हैं. जो ये व्यू हमें डिस्प्ले हो रहा है उस व्यू को देख लेते हैं. हमारे पास ये हमारा इंडेक्स, ये वेलकम टू द पार्टी, थैंक्स फॉर विजिटिंग दिस द वेलकम पेज. और ये हमने एक वो अपना बनाया था कि किस तरीके से लेआउट इस पे हमने क्या करना है, सेट करना है. अब हम अपने उसी पेज को जो वो डाटा डिस्प्ले कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ टेबल उसको देख लेते हैं. ऑल गेस्ट लिस्ट ये हमारा है. अब आप देखिए हमने ये टेबल का टैग यूज किया. ये टेबल का टैग हमने हेडिंग 1 के बाद यूज किया और उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट को यूज किया. अब हम क्या करते हैं, इस टेबल के टैग को इफ का पार्ट बना देते हैं. ये यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं. इसको हमने क्या किया, ये कंट्रोल एक्स किया और उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे ये जो इफ है कि अगर मॉडल कंटेन डाटा मॉडल इज नॉट इक्वल टू नल, फिर ये काम सारे के सारे करे. तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने वो टेबल का जो टैग है HTML टैग वो हमने यहाँ पे पुट किया. और उसके बाद देखें फिर ये हमारा C# का कोड शुरू हो गया. तो ट्रांजिशन के लिए हमने क्या सिंबल यूज कर लिया, ऐट सिंबल यूज किया. जस्ट ये चेंज करना है हमने यहाँ पे. और इसी तरीके से ये टेबल का टैग भी फिर
उसी इफ का हिस्सा हो जाएगा, इफ पार्ट का। इसको भी क्लोजिंग टैग को हमने यहाँ से अलहदा किया। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा लूप चल रहा है, ये इफ वाला लूप है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, सॉरी इफ वाला ब्लॉक है। इफ, ये इफ विल अटेंड, ये देखें ये सारे का सारा वो यहाँ पर लिख रहा है। और यहाँ जाकर एल्स ब्लॉक कि किसने रिप्लाई किया, नो वन हैज रिप्लाइड, ये सारे के सारा आपको नजर आ रहा होगा। अब हमने उस इफ के ब्लॉक में ये देखें, ये इफ शुरू हुआ तो इफ पार्ट में हमने टेबल को क्या करना है, क्लोज करना है। टोटल गेस्ट एल्स, ये देखें ये एल्स पार्ट शुरू हो गया, सॉरी इधर से ये एच ये चल रहा है, ये एल्स पार्ट शुरू हो गया। तो यहाँ पर हम आकर इसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल वी किया, ये हमारा टेबल क्लोज हो गया। आप देख लें फिर सिमिलरली वो ऐड सिंबल का यूज करना जरूरी है। जैसे ही हमने यहाँ पे ये HTML का टैग लिखा था तो वो शुरू हो गया था सारे का सारा, मतलब ये हम इंडेंटेशन कर लेते हैं इसकी थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसके रिजल्ट के बाद फिर हमें अंदाजा हो सकेगा। ये फॉर ईच लूप आ गया, ऐड सिंबल आ रहा है, आप देख रहे हैं जब बार बार। फिर ये टोटल गेस्ट्स आ गए, फिर उसके बाद इफ। अब ये ट्रांजिशन जैसे ही हो रही है, और आप देखेंगे अगर ऐड सिंबल ना आए तो वो उसका इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कलर भी चेंज कर देता है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि अब वो टेबल ऊपर आ रहा है या टेबल नीचे आ रहा है। पहले वो टेबल आप देख रहे थे कि जी समरी के बाद आ रहा था, अब उस टेबल को समरी से पहले आना चाहिए अगर तो किसी ने अप्लाई किया है। इसी तरीके से ज्वाइन न्यू फॉर्म, इधर से हमने ये फैयाज, ये कॉन्टेक्ट और ये ईमेल विल अटेंड, और अब हमने क्रिएट किया। अभी भी आप देखें कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वापस क्या कर रहा है। उसी तरीके से ऑल गेस्ट लिस्ट और गेस्ट नेम, कॉन्टेक्ट, ईमेल, विल अटेंड, समरी ऊपर आ रही है और टेबल नीचे आ रहा है, जबकि हम चाह रहे हैं कि समरी नीचे आए और टेबल ऊपर आ जाए। उसको हम देखते हैं कि वो क्यों नहीं ऐसे कर पा रहा। अब ये देखें, ये फॉर ईच लूप चला, इफ टोटल गेस्ट, ये एल्स पार्ट आ गया, ये एच आर आ गया। ये फॉर ईच लूप यहाँ पर आकर क्या हो गया है, ये क्लोज हो गया फॉर ईच के बाद। अब ये देखें ये टेबल का टैग आ रहा है, इस टेबल के टैग को यहाँ से आप अगेन क्या कर लें, कट कर लें, और फिर देखें कि ये फॉर ईच का ये ब्लॉक चल रहा है, ये फॉर ईच का ब्लॉक, और उसमें ये, और ये जैसे ही एच आर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास वो टेबल का टैग क्लोज हो। और आप देख सकते हैं जैसे ही टेबल का टैग या एलिमेंट हमने क्लोज किया, वो ऑटो इंडेंट हो गया सारे का सारा। अब दोबारा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ये ट्रबल शूटिंग या थोड़ी सी सिंटैक्टिकल किस तरह से इसको ठीक करना है, आप इस पे जितना तवज्जो देंगे उतना आसानी से आपका GUI और प्रेजेंटेशन लेयर बेटर होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि ऑल गेस्ट लिस्ट,
गेस्ट नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, विल अटेंड। अब देखें टेबल टॉप पे आ गया और उसके नीचे उसकी क्या आ गई है, समरी आ गई है। अब इसको मजीद थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम यहाँ नाम बदल लेते हैं असलम और बाकी इंफॉर्मेशन वही सेम रहने देते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जी फैयाज, उसके नीचे एक असलम। अब देखें कुछ निस्बतन बेहतर होना शुरू हो गया। अब हमने जैसे पहले भी बताया कि आप CSS या बूटस्ट्रैप यूज करके इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। अब हम CSS और बूटस्ट्रैप कैसे इस पे अप्लाई करते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि ये व्यू, ये RSVP न्यू, ये व्यू कौन सा लेआउट यूज कर रहा है और वो लेआउट बूटस्ट्रैप यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए अभी हम देख लेते हैं कि ये RSVP न्यू का, ये देखें, ये ऑलरेडी मतलब हम जो इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने वो डिस्प्ले कर रहा है, उसी को देख लेते हैं। ये इसके शुरू में देखते हैं तो ये लेआउट 2 यूज कर रहा है। कौन सा लेआउट यूज कर रहा है? इट इज यूजिंग लेआउट 2। अब इस लेआउट 2 के अंदर ये लेआउट 2 है। अब इस पूरे के पूरे लेआउट 2 के अंदर हमने कहीं भी उसे नहीं बताया कि आपने बूटस्ट्रैप या CSS यूज करना है। तो हम इस पे बूटस्ट्रैप या CSS यूज करके फिर इसका व्यू देखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इजीएस्ट सॉल्यूशन कि जो डिफॉल्ट लेआउट इस टेम्पलेट ने क्रिएट किया था, हम उस डिफॉल्ट लेआउट से जस्ट आप देखें, ये मैं बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी कॉपी कर रहा हूं और इस बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को अपने लेआउट 2 में शामिल करते हैं। ये आ गया, इधर आकर ये हेड में मैंने इसको शामिल किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं। आपके जहन में प्रीवियस व्यू भी रहना चाहिए और ये करंट व्यू भी। तो अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप को यूज करके, CSS को यूज करके अपने GUI को मजीद बेहतर कर सकते हैं। ये देखें, आप देखें जैसे ही हमने उधर से बूटस्ट्रैप यूज किया तो पेज का व्यू, प्रेजेंटेशन टोटल चेंज हो गया, फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करने से, एक बूटस्ट्रैप को हमने इंक्लूड किया और उसने ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस किया। ज्वाइन न्यू फॉर्म, उसको हम फिर क्लिक करते हैं। अब देखें ये आ गया। यहाँ पे फिर मैंने अगेन पास किया फैयाज और ये DG खां और इधर से सॉरी ये ले लिया। कॉन्टेक्ट में कोई नंबर दे दें हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7 ये, और उसके बाद 9, क्लिक द क्रिएट बटन। अब आप देख सकते हैं वो सारे का सारा GUI टोटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है, स्कैटर्ड हो गया है। वो कॉलम आपको नुमाया नजर आ रहे हैं उसी टेबल के। और फर्दर अगर हम इसको एक और इसमें ऐड करके देखते हैं, अब देखें जैसे ही हमने इसका लेआउट चेंज किया, उसने CSS पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी बूटस्ट्रैप की जो टेबल टैग पे क्लासेस अप्लाई होती हैं, डिफॉल्ट वो क्लासेस अप्लाई की और उसकी सारी की सारी ऑटो एडजस्टमेंट कर दी, रिस्पॉन्सिव GUI में कन्वर्ट कर दिया। अब मजीद एक और ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे उसी तरीके से हम क्या करते हैं, असलम, और हमने कहा क्रिएट। आप देख सकते हैं अब इसका व्यू, फिर हमने कहा एक और मजीद हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। यहाँ विल अटेंड को खत्म किया, यहाँ पे हमने खालिद को हमने किया क्रिएट। आप देखें, अब देखें टोटल गेस्ट 3 हैं, विल अटेंड 2 और विल नॉट अटेंड 1। और इसका GUI अब आप देखें, या इसका प्रेजेंटेशन व्यू जो भी यूजर के सामने जा रहा है वो चेंज हो गया। जस्ट हम अभी अपनी क्लासेस सिर्फ उसकी टेबल जो हमारा HTML एलिमेंट है उस पे हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे इसका GUI किस तरह से चेंज हो सकता है। अब ये देखें, ये हमने लाइब्रेरी उसकी ऐड कर ली और ये बिल्ट इन उसमें पड़ी हुई है आपके पास। अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास www root CSS, आप देख सकते हैं CSS के अंदर ये साइट की CSS भी अवेलेबल है और बाकी भी इसी तरीके से आप सारी की सारी अपनी चेक कर सकते हैं कि ये इसके अंदर सारी शामिल है।
नेक्स्ट अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि उस टेबल को थोड़ा सा उस टेबल पे फर्दर क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं। तो देखें ये हमने सिंपल लिया था टेबल, टेबल क्लास में क्या अप्लाई कर दिया, उस पर टेबल क्लास अप्लाई कर दी और फर्दर हम उस पर कोई एट्रीब्यूट हम कहते हैं टेबल बॉर्डर्ड कर लें, टेबल का क्या बन जाए, बॉर्डर बन जाए। अब हम उसे चला कर देखते हैं अब वो किस तरह का व्यू नजर आएगा। सिमिलरली हम 2-3 और यहाँ पर क्लासेस और उसके एट्रीब्यूट चेंज करते जाएंगे और फिर देखते जाएंगे कि व्यू किस तरह से नजर आ रहा है। देखिए हमने ज्वाइन न्यू फॉर्म को क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे उसी तरह सिमिलरली ये पास किया, विल अटेंड ईमेल भी पास कर देते हैं और क्रिएट का बटन क्लिक किया। डियर स्टूडेंट यू कैन सी दैट, देखें अब ये उसने ऑटो बॉर्डर भी इसके साथ क्या कर दिए, लगा दिए। नो इट्स अप टू यू, अब फर्दर इसको और मजीद कितना फैंसी कितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, एक दो और फिर हम अप्लाई कर लेते हैं। अभी हमने बॉर्डर अप्लाई किया, उसके बाद हम इसको कह देते हैं टेबल डार्क। अब उसके बाद फिर हम एक दफा इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं टेबल डार्क में क्या ये उसमें चेंज करता है, कैसे चेंज करता है। ये सिर्फ उसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर को ये काबू करने की कोशिश करेगा। ज्वाइन न्यू फॉर्म और यहाँ आगे अगेन कॉन्टेक्ट दिस एंड ईमेल दिस एंड विल अटेंड एंड क्रिएट। देयर स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि हेडर और उसमें जो रोज हैं उस पे फॉन्ट को भी उसने किया और उस डिस्प्ले को भी बेहतर किया। जस्ट हमने वहां पे उसके एट्रीब्यूट सेट किए। सिमिलरली एक और रो ऐड करके देखते हैं इसमें, फिर इसका व्यू देख लेते हैं किस तरह से नजर आता है। अकरम और ये हमने क्रिएट, ये देखें स्टूडेंट्स अब ये नजर आ रहा है। फिर एक और प्रॉपर्टी हम इस पे क्या कर लेते हैं, अप्लाई करके देख लेते हैं इधर से क्लास में कि टेबल डार्क है और हमने कहा टेबल स्ट्रिप हो, हमने टेबल की स्ट्रिपिंग कर दी, उसको फिर चला कर देखा। लेट्स सी वो रिप्लाइड, ये देखें टेबल नजर आ रहा है, नीचे टोटल गेस्ट, विल अटेंड, विल नॉट, और वो सारे का सारा जो उसका एक स्ट्रक्चर है जो बता रहा है कि अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया। हम कर लेते हैं अप्लाई इसके लिए। आए यहाँ पर आकर उसी तरीके से हमने ये अगेन दिस दिस एंड विल अटेंड और क्रिएट। देखें डेयर स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं उनका उसने स्ट्रिपिंग भी की हुई है। एक और रो ऐड करते हैं फिर शायद आपको और वाज़ेह नजर आ जाए। यहाँ आकर हमने नसीम और हमने कहा क्रिएट। अब आप देखें उसने स्ट्रिपिंग कर दी। अगर स्ट्रिपिंग का इस इफेक्ट को मजीद तवज्जो से देखना है फिर उसके अंदर हम एक और यहाँ पे कोई और ऐड कर लेते हैं, खलील and create. Now you can see the result is in front of you. It's up to you, आप जैसे भी चाहें। अभी टोटल गैस को बेशक से नीचे इसके एक ही रो में डिस्प्ले करा लें, मल्टीपल में रहे, इट्स अप टू यू। Dear student, till to time this data is stored in a collection. Whenever you close your application, this data will be automatically erased and you are required to again feed that data. Now what is required? The requirement is that कि हम इस डाटा को परसिस्टेंट करना चाह रहे हैं। परसिस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो इस डाटा को यहाँ से हम रिसीव करके अपने सिस्टम सर्वर के फाइल सिस्टम में उसको सेव कर लें, या फिर हम डेटाबेस यूज कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
कि इस डाटा को फिर हम परमानेंट किसी मतलब फाइल में या डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं. यू आर अगेन रिक्वेस्टेड टू प्रैक्टिस इट and feel free to ask any question. Dear student, this is the summary of today's lecture that we have covered in our today's session. You are again requested or required to feel free where you need my help using my email address or Google Classroom. We can solve our problem regarding this. Thank you.